Students, am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So, we are going to start with the topic behavioral implementation. So, on the behavioral implementation, we'll be discussing about the role of leadership and corporate culture in strategy implementation. And then the next topic we'll take up today is the functional implementation and the operational implementation. So, behavioral implementation is quite an important aspect in strategy implementation. Its significance can be clearly understandable in when we plan, formulate, and implement strategy, because everything has to be done by the individuals, managers at different levels. So they are the ones who take appropriate actions involved in implementation. So individual focused factors become very vital. So the behavioral implementation of strategies basically focuses on these things: leadership, the corporate culture, corporate politics and use of power, personal values and business ethics, and social responsibility. All these are the factors that are part of the issues related to the behavioral implementation. So this is basically called change management. So whenever there comes any change, the resistance has to be come from the humans. Okay, so to overcome their resistance, to manage this change, this behavior implementation is taken care of. So the two issues that we'll be discussing is that are there in your syllabus and that we'll be discussing is leadership and corporate culture. So we won't be touching the other ones, that is corporate politics and use of power, personal values and business ethics and social responsibility. Is it clear, students? Yes, ma'am. Okay, so the first thing is leadership implementation. So today's business face change on all fronts, whether that's economic front, regulatory front, competition, customers, or the access to resources. So everywhere they are facing changes on means changing changes from time to time. Consequently, every company is adjusting its strategy and that employs change. The success of your strategy depends upon your people. Will they be able to implement the strategy and achieve the goals? So, no doubt, uh, means beautifully planned strategy is there. If it is not successfully implemented, it will be of no use. So strategy implementation is equally important, and as strategy implementation has to be done by individuals, their role is quite important. So strategic leadership basically provides the vision, direction, the purpose for growth, and context for the success of the corporation. It also initiates outside the box thinking to generate future growth. Strategic leadership is not about micromanaging business strategies. Rather, it provides the umbrella under which businesses devise appropriate strategies and create value. So, as you all are already aware of the fact that leaders are the one who provides vision to a vision, or we can say the general direction to the overall organization. So their role is to show the path, um, and drive the people on that path towards the success towards the success or towards the growth of the organization. So if you're a leader at any level, your people look to you for guidance on what needs to be done and how. The key requirements of leaders are to set the strategy, communicate the strategy, implement the strategy through people, and get results. So these are the tasks, or these are the roles of any particular leader. So
the follower or the employees in the organization, they look forward to their leader for guidance and direction at any point, and the leaders are the one who guides them throughout means strategy formulation and through the um, strategy implementation as well. Now, the leadership that is important is called strategic leadership. सो मैनेजर्स प्रोवाइड लीडरशिप टू एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो मैनेजर्स ही हैं जो लीडर्स का रोल जो है वो प्ले करते हैं. Organizational leaders influence the behavior of subordinates so that they willingly and enthusiastically work towards the achievement of organizational objectives. तो जो मैनेजर्स हैं जिनको हम ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स कहते हैं, बेसिकली दे आर द वन हु इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द पीपल वर्किंग अंडर देम, ताकि वो अपने आप ही अपनी मर्जी से इंथ्यूजियास्टिकली जो है वो काम करें, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हो पाए. So strategic leadership is an ability to lead an organization towards the achievement of its objectives. So if we have to define strategic leadership, it's nothing but an ability of the leader to lead an organization towards the achievement of its objectives. So the task of leader is to lead the people towards achievement of the organizational objectives. The tasks involved in exercising strategic leadership are typically to anticipate, envision, maintain flexibility, and empower others to create strategic changes as and when necessary. ठीक है. सो एंटिसिपेट करना होता है मतलब एक तरह से फोरकास्ट करना, फ्यूचर को एंटिसिपेट करना, इन्विजन करना कि देखना आगे जो है वो क्या हो सकता है. ठीक है. और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना और दूसरे लोगों को पावर्स देना ताकि वो अपने लिए डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके. सो दीज आर द टास्क इन्वॉल्वड इन द स्ट्रेटेजिक लीडरशिप. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. राजकुमार, तुमने लास्ट टाइम कहा था कि मैम आप पीपीटीज फॉरवर्ड कर देना. अभी मैंने की नहीं है, मैं इकट्ठा ही सारी पीपीटीज जो है वो आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी. ठीक है. मैम फिर स्टडी भी करना पड़ता है. ओके. अगर आपको इमीडिएटली चाहिए तो फिर मैं आज ही कर देती हूँ. ठीक है. ठीक है मैम. हाँ जी. So strategic leaders at different levels are the one that are listed over here. So basically we can say there are 4 type of strategic leaders that work in an organization. The first level of strategic leaders exist at the corporate level, and they are generally the CEO, chief executive officer, senior executives, or the corporate staff members. And their task is to manage the strategic management process for whole organization. So they are responsible for the complete organization. Then at the other level, we have business level manager, and they are the in charge of the business or a particular division or a particular strategic business unit, and their task is to manage the strategic management process at their business level or at their division level or the strategic business unit they are holding. So their responsibility lies, their responsibility area is limited to the business they are in charge of. Then we at the other level we have functional level managers, and the functional level managers are the in charges or the means manager for each function that is being performed in the organization. So the different functions you already know, it could be human resources, it could be finance, marketing, operations, so and so on. So these managers manage the strategic management process at their function level. So जिस भी फंक्शन के वो मैनेजर हैं, चाहे वो इफ इट इज लाइक से इट इज ह्यूमन, देयर इज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को सिर्फ एचआर के पार्ट पे ही डील करेगा. देन वी हैव ऑपरेशनल मैनेजर्स who are responsible for the implementation of strategies within their assigned functional areas. They occupy positions such as deputy manager of marketing operations. So at the lower level, we have operational managers who are actually responsible for doing the varied tasks.
ठीक है, जो भी ऑपरेशंस अंडरटेक होने हैं विद इन ईच फंक्शन दैट हैज टू बी टेकन केयर बाय द ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स एंड देयर liability, their responsibility is limited to the operations they are taking care of. Now, next is what are the tasks of strategic leaders? So there are basically 5 tasks that are being performed by any strategic leader, be it a corporate level strategic manager or the business level strategic management, functional level strategic manager or operational level strategic manager. Each and every strategic leader, basically they perform all these 5 type of functions. The very first one is determining strategic direction. So this is one of the crucial task of strategic leader. To provide a sense of direction to the organization. So the strategic direction is basically concerned with the future shape of the organization. So it has two components: core ideology and the envisioned future. कोर आइडियोलॉजी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की वो लोगों को मोटिवेट करती है उनके हेरिटेज के कारण, और इनविजन फ्यूचर का मीनिंग है कि हमने फ्यूचर में क्या जो है वो अचीव करना है, और इसके लिए जो बहुत सारी एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं इनविजन फ्यूचर को अचीव करने के लिए। ठीक है, सो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का मीनिंग है giving them core ideology. Core ideology is basically the motivating factor that is related to the heritage of the organization, or envisioned future का meaning है कि what they want to achieve in the future. So that basically requires a huge amount of efforts. Is it clear, students? Yes, ma'am. Second one is effectively managing the organizational resources portfolio. So as the strategic leaders are the one who are required to manage effectively the portfolio of organizational resources. So this portfolio of resources include financial capital, human capital, social capital, etc. So इनका जो है ये जो है किस तरह से जो मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज के पोर्टफोलियो को, ये बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो किसी भी एरिया में जो है वो कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप करते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं, और जो कंपनी की सोशल कैपिटल है उसको डेवलप करते हैं जिससे ये उसको इफेक्टिवली मैनेज कर पाए। Next is sustaining an effective organizational culture. ठीक है, सो जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो हमने अभी डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज बेसिकली अ सेट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज बिलीव्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. So sustaining an effective organization culture is also one of the responsibility of the strategic leaders. So they are not only required to sustain, but they are also required to build an effective organizational culture, and then they are required to put in efforts to sustain the organization culture they had just built. Then next is emphasizing ethical practices. So the strategic leaders are the one who emphasize on following the ethical practices within the organization. And the last one is establishing balanced organizational controls. So the strategic leaders, they use a combination of financial and non-financial controls to help the organization to achieve its objectives. So these are the various critical tasks that are being performed by the strategic leaders. Hope you have understood. Yes, students? सभी को समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, we'll be talking about the varied leadership styles. You already have done this in your organizational behavior as well as in PPM. ठीक है, so दोबारा से अब हम यहाँ पे करते हैं. So there are various styles of leaders. हर लीडर का काम कराने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है. So style basically describes how top managers behave in leading and motivating their organizations to achieve their desired ends. So the style adopted by a strategist relates to the basic leadership functions of leading and motivating.
So the way they lead their followers and the way they motivate them, and this is called the leadership style. So time to time, जो different जो researchers and they have suggested the newer styles. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1939 में जो है क्लासिफिकेशन दी थी, ये मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए जो है वो बता रही हूँ. ठीक है, so 1939 classification was done by the Kurt Lewin, and he described the styles as democratic, autocratic and laissez-faire style. ठीक है, so बाकी जो है देन उसके बाद जो है वो बास ने एक फ्रेमवर्क जो है वो इस्टेब्लिश किया था, जिसमें उसने दो तरह के लीडरशिप स्टाइल जो है वो डिस्क्राइब किए थे, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल स्टाइल. ठीक है, फिर उसके बाद एक कॉन्टिजेंसी अप्रोच भी थी. इस अप्रोच के कारण क्या था कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो बेसिकली रिलेट करता है व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन द लीडर इज इन. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा. वो एक कॉन्टिजेंसी थ्योरी थी कि कॉन्टिजेंस मतलब सिचुएशनल फैक्टर्स जो है वो उसका लीडरशिप जो है वो स्टाइल डिस्क्राइब करते हैं. So now we'll be discussing the major styles जो time to time describe किए गए हैं, starting with the autocratic leadership. आप में से कौन बताएगा कौन होता है autocratic leader? Yes, because you already have studied this topic, the leadership styles. You might be aware of the term autocratic leader. Who is an autocratic leader? Would anyone like to answer? Yes, students. I'm Are you- leader who is taking all the decisions by itself. हाँ, autocratic का मीनिंग है कि the one who doesn't give any importance to the team members, और वो अपने आप ही सब कुछ जो है वो करता है. So this is an extreme form of transactional leadership. This approach assumes that work is done only because it is rewarded, where leaders have absolute power over their workers or team. Staff and team members have little opportunity to make suggestions, even if these would be in the team's or the organization's best interest. Autocratic leaders make decisions without consulting their teams. This is considered appropriate when decisions generally need to be taken quickly, when there is no need for inputs from the team, and when team agreement isn't necessary for a successful outcome. So most people tend to resent being treated like this. Therefore, autocratic leadership often leads to high levels of absenteeism and staff turnover. ठीक है, so we cannot say that this is one of the best style. So herein जो है वो कह लो कि जो लीडर है वो अपनी ही चलाता है. ठीक है, वो अपने जो वर्कर्स है उनकी उनकी कोई भी बात जो है वो नहीं सुनता. ठीक है, सो इसलिए जो लोग हैं उसको ज्यादा पसंद नहीं करते, और वहां पे जो है वो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट जो है वो हाई रहता है, और एब्सेंटिज्म रेट जो है वो काफी हुई है. Next is the bureaucratic leaders. Bureaucratic leaders are the one who work by the book. They follow rules rigorously and ensure their staff follow procedures precisely. Okay, whatever rules have been designed by the organization, they are the one who go by the rule book. So this is a very appropriate style for work involving serious security risks, such as working with machinery with toxic substances or at dangerous heights, or where large sums of money are involved, such as handling cash. So in all these scenarios, this kind of leadership style will be very helpful, because therein you need to follow the rules only. Next is charismatic leadership. A charismatic leadership style can seem similar to transformational leadership, that leads to positive changes in those who follow such leaders, because these leaders inspires lots of enthusiasm in their teams and are very energetic in driving others forward. However, charismatic leaders tend to believe more in themselves than in their teams, and this creates
a risk that a project or even an entire organization might collapse if the leader leaves. In the eyes of the followers, success is directly connected to the presence of the charismatic leader. So, charismatic leadership define करने के लिए मैं एक ही word बोलूंगी, नरेंद्र मोदी. ठीक है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, आपने देखा होगा कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको हमेशा अंधभक्त बोला जाता है बिकॉज दे ब्लाइंडली फॉलो देम. Charismatic leadership is the one who has a great who has a power to means instill enthusiasm in their followers और वो उसको जो है वो फॉलो करते हैं. ठीक है, so there is a kind of charisma around their personality जिसके कारण जो लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं और वो उनको फॉलो करते हैं. Is it clear, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then we have democratic leadership or participative leadership, as it is clear from the name. ठीक है, democracy is one where everyone participates. So similarly जो democratic leader है वो ऐसा होता है जो दूसरे लोगों को participate करता है decision making में. So although democratic leaders make the final decisions, they invite other members of the team to contribute to the decision making process. This not only increases job satisfaction by involving team members, but it also helps to develop people's skills. Team members feel in control of their own destiny, so they are motivated to work harder by more than just a financial reward. So because the in this kind of leadership, the people, the one who are followers of the leader, they feel good because they are given chance to participate in decision making. So that's this way they feel that they are also an important part of the organization. So it gives them satisfaction and they keep on working with the organization. Then we have laissez-faire leadership. This French phrase means leave it be, and it's used to describe leaders who leave their team members to work on their own. ठीक है, खुला छोड़ देना बिल्कुल कि जैसे भी आप करना चाहते हो कर लो काम. It can be effective if the leader monitors what's being achieved and communicates this back to the team regularly. Most often, laissez-faire leadership is effective when individual team members are very experienced and skilled self-starters. Unfortunately, this type of leadership also occurs when managers don't apply sufficient control. So laissez-faire का मीनिंग है, मतलब कई लीडर्स तो ऐसे होते हैं कि दूसरों को काम करने की ऑटोनॉमी देने के बाद वो उनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, चेक करते हैं कि whether they are working according to the guidelines or not. And there are some other leaders who just make them free without exercising any control over them. So तो उस केस में laissez-faire जो लीडरशिप है वो बिल्कुल ही जो है वो फेलियर हो जाती है बिकॉज लीडर डजंट एक्सरसाइज एनी कंट्रोल ओवर द फॉलोअर्स. ठीक है, और ये जो लीडरशिप स्टाइल है इट्स मोर इफेक्टिव इन द केसेस वेयर इन ऑल द टीम मेंबर्स आर क्वाइट एक्सपीरियंस्ड. ठीक है, और वो अपने आप काम करने के कैपेबल होते हैं, बट स्टिल द लीडर हैज टू means have control over the team. Is it clear? Yes, ma'am. Then is people oriented leadership or relations oriented leadership. So this is the opposite of task oriented leadership. With people oriented leadership, leaders are totally focused on organizing, supporting and developing the people in their teams. It's a participatory style and it tends to encourage good time work and creative collaboration. So जो people oriented leadership है उसमें जो फोकस रहता है वो सारा का सारा लोगों की स्किल्स डेवलप करने के ऊपर रहता है. सो द लीडर बेसिकली focuses on developing the team members that are working with him. Next is the task oriented leadership. Highly task oriented leaders focus only in getting the job done and they can be quite autocratic. They actively define the work and the roles required, put structures in place, plan, organize and monitor.
However, because task-oriented leaders don't tend to think much about the well-being of their teams, this approach can suffer many of the flaws of autocratic leadership, with difficulties motivating and retaining staff. So task-oriented leadership is only concerned about getting the job at hand done through the people. So he's least bothered about the problems of the people. So उसको सिर्फ ये होता है कि काम उसने करवाना है किसी भी ढंग से, ठीक है? So this is more of a autocratic type of leadership style. Then the most important ones that are quite relevant means जो modern जो कहते हैं हम leadership styles हैं वो है transactional leadership and the transformational leadership. So transactional leadership style starts with the idea that the team members agree to bear their leader totally when they accept a job. The transaction is usually the organization paying the team members in return of their efforts and compliance. So the leader has a right to punish team members if their work doesn't meet the predetermined standard, and the team members can do little to improve their job satisfaction under transactional leadership. This is really a type of management, not a true leadership style, because the focus is on the short-term task and it has serious limitations for knowledge-based or creative work. However, it can be effective in other situations because transactional leadership जो है वो believe करती है कि लोग सिर्फ इसीलिए काम करते हैं क्योंकि हम उनको रिवॉर्ड करते हैं, ठीक है? जैसे पहली लाइन में लिखा हुआ है, the transaction is usually the organization paying the team members in return of their efforts and compliance. So this transactional leadership believes that people are working only because they are being rewarded for the kind of work they are doing for them. So the other need means apart from the financial incentives, the type of the non-financial motivation is not taken care of. So in this type of leadership, the people working in the team will be demotivated. Although they are getting good financial rewards, but they are not getting any time of non-financial reward, so they may not be motivated. Is it clear, students? Yes, ma'am. Then next is the transformational leadership. So people with this style are true leaders who inspire their teams constantly with a shared vision of the future. While the leader's enthusiasm is often passed on to the team, he or she need to be supported by detailed people. That's why in many organizations, both transactional and transformational leadership are needed. The transactional leaders ensure that routine work is done reliably, while the transformational leaders look after initiatives that add new value. So, wherein a creative kind of work is required, where out of box thinking is required, therein we need transformational leadership. ठीक है? और जहाँ पे हमें रूटीन का काम जस्ट कराना है, वहाँ पे हमें ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो है वो रिक्वायर्ड होती है. सो हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक ही तरह का लीडर जो है वो नहीं चला सकता. एक ही लीडर को डिफरेंट टाइप के जो स्टाइल्स है वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशंस, बिकॉज वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ लीडर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस. सो कोई भी एक लीडर जो है वो एक लीडरशिप स्टाइल जो है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. सो वी आर डन विद द वेरियस स्टाइल्स ऑफ द लीडरशिप. नेक्स्ट इज द लीडरशिप रोल इन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन. So strategic leadership entails the ability to anticipate, envision, maintain flexibility and empower others to create strategic changes as necessary. ठीक है? तो जब भी स्ट्रेटेजिक चेंज की जरूरत होती है तो वहां पे लीडरशिप का रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. A manager with strategic leadership skills exhibit the quality to guide the company through the new competitive landscape by influencing the behavior, thoughts, and feelings of co-workers, managing thoughts of others, and successfully dealing with rapid, complex change and uncertainty. ठीक है? तो एक कोई भी मैनेजर है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ऑल द मैनेजर्स वर्किंग एट डिफरेंट लीडर्स डिफरेंट लेवल्स, दे आर बेसिकली द लीडर्स. तो एक मैनेजर जिसके पास स्ट्रेटेजिक लीडरशिप स्किल्स हैं,
ठीक है, वो लोगों को गाइड करता है, अपने जो को वर्कर्स है उनके जो थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, या उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनको वो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ताकि जो रैपिड चेंज हो रहा है, जो भी अनसर्टेनिटी है, उसको कंट्रोल किया जा सके और चेंज को जो है वो इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। Strategic leaders are CEO, board of directors, top management teams, divisional general managers. They must be able to deal with the diverse and cognitive complex competitive situations that are characteristics of today's competitive situation. ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि 4 तरह के जो है हमारे स्ट्रेटेजिक लीडर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका रोल वन बाय वन हम जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है रोल ऑफ सीईओ। सो जो सीईओ होता है उसका रोल जो है दैट इज थ्रू आउट द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, दे आर द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शंस व्हिच आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज सीईओ इज द पर्सन हु इज सिटिंग एट द टॉप position in the organization, so he is responsible for each and everything that is happening in the organization. So हम कह सकते हैं कि जो सीईओ है, he or she performs a strategic task or actions which are necessary to provide a direction to the organization so that it achieves its purpose. तो इनका जो मेन जो रोल है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है। सो इसलिए इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट रहता है इन डिस्क्राइबिंग द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इन डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन or in strategy formulation. In all these areas, this particular person has a significant role to play. So, जो बिकॉज सीईओ का रोल जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए बहुत सारे रिसर्चर्स ने उनका रोल, फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिफाइन करने की कोशिश की है। ठीक है, तो 2 तरह से उन्होंने उनके रोल जो है वो प्ले करते हैं। पहला है डिफाइनिंग रोल थियोरेटिकली एंड दूसरा है डिफाइनिंग रोल प्रैक्टिकली। सो जो बहुत सारी जो थियोरेटिकली जो है वो सीईओ को कंसिडर किया जाता है कि ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस, he is the organization leader or organizer or the organizational builder, the chief administrator, implementer or coordinator, and the communicator of organization purpose, motivator, personal leader or mentor. On the other hand, other practitioners, they had defined the role practically. ठीक है, उनका एक्सपीरियंस जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है सीईओ का रोल जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए। सो इसमें से जो है चेस्टर बर्नार्ड है, हेनरी फ्योल है, इन्होंने इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है उनका रोल जो है उसको प्रैक्टिकली डिफाइन करने के लिए। कमिंग नेक्स्ट इज द सेकंड वन इज द सेकंड स्ट्रेटेजिक लीडर इज द सीनियर मैनेजर। ठीक है, जो सीनियर मैनेजमेंट है दैट कंसिस्ट ऑफ मैनेजर्स एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द मैनेजरियल हायरार्की. So all the people who are working immediately under the CEO are called the senior managers. तो उनका जो मींस जो लोग हैं सीनियर मैनेजमेंट में, they act as the board of directors usually on a rotational basis. So all of the senior managers, they work on in different top level committees that are set by the board to look after the matters of strategic importance. तो जो senior managers and they perform a variety of roles in assisting the board and the chief executive in the formulation of and implementation and the evaluation of strategies. Next is the role of business level executives. As we have already discussed that the business level managers are the one who are in charge of a particular business or division or the strategic business unit. So they are responsible for strategy formulation and implementation for their business only. ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरे कॉर्पोरेट से उनका कोई लेना देना नहीं होता, वो अपने बिजनेस के बारे में डिसीजन मेकिंग जो है वो करते हैं। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ functional and the operational managers. So this is the last level in the
corporate hierarchy. So these are the persons who are in charge of the different functions, or means who are taking care of the operations within one functional area. ठीक है, तो इनका काम होता है कि वो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करें अपने फंक्शन के लिए, ठीक है, और जो फंक्शनल प्लान्स हैं उनको डिफाइन करें और टारगेट सेट करें अपने डिपार्टमेंट के लिए और उसको अचीव करने में जो है वो हेल्प करें. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक लीडर्स. ठीक है, सो जैसे हम बाकी पर्सनल जैसे means the other people who are working in the organization, they need to be developed. Similarly, strategist has to be developed. जिससे पहले कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकें ऑफ रिलेटेड टू द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, उससे पहले उनको उस रोल के लिए जो है वो डेवलप किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है. सो there are three issues which are relevant while developing the strategic leaders, and the first issue is the choice of future strategists. ठीक है, so choosing a future strategist, it is a matter of great concern because the future of organization depends upon the crucial decision. अगर हम बहुत अच्छा जो लीडर है वो चुन लेते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट मीन्स आवर फ्यूचर विल बी बेटर. और अगर हम बहुत बुरा लीडर कोई कर लेते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पहले से भी जो है वो खराब पोजीशन में चली जाएगी. सो इन इंडिया, organizations in the public enterprises or the multinational family owned और जो professionally managed private companies हैं, जो non government organization है, they differ in their policies and practices with regard to developing strategic leaders. So government में क्या है कि जो central और state administrative services के person होते हैं, ठीक है, वो handle करते हैं public sector enterprises को. ठीक है, so जो फैमिली ऑन बिजनेसेस हैं उसमें से फैमिली मेंबर में से कोई पर्सन जो है वो अपॉइंट किया जाता है एज अ स्ट्रेटेजिक लीडर. ठीक है, बट जो प्रोफेशनली मैनेज और जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो स्ट्रेटेजिस्ट को कॉम्पिटिटिव बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, सो उसमें जो है पर्सन का एक्सपीरियंस और उसकी जो मेरिट्स हैं, उसकी जो स्किल्स हैं, एवरीथिंग इज बीइंग कंसिडर्ड. सो बहुत ही जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं उनको स्पॉट किया जाता है और फिर उनको ग्रूम किया जाता है टॉप पोजीशंस के लिए. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, सो द चॉइस ऑफ फ्यूचर स्ट्रेटजिस्ट बेसिकली डील्स विद आइडेंटिफाइंग द लीडर टू बी अपॉइंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज द करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. So both formal and informal means are adopted to put in place the career planning and development for future strategic leaders. ठीक है, तो डिफरेंट तरह के जो मीन्स हैं वो डेवलप किए जाते हैं उनकी जो करियर प्लानिंग के लिए. ठीक है, जैसे जो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, दे रिलाई ऑन टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फॉर डेवलपिंग देयर एलाइट मैनेजमेंट कैडर. ठीक है, और बहुत सारी अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सिमिलर टाइप की जो है वो स्ट्रैटेजीज जो है वो फॉलो करती हैं. देन है सक्सेशन प्लानिंग. ठीक है, सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप पोजीशन है वो बहुत ही कम होती हैं और बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उस पोजीशन को टेक अप करने के लिए विलिंग होते हैं. ठीक है, सो जो चॉइस ऑफ स्ट्रेटजिस्ट है, जहाँ उनकी जो करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है एक रिजर्वायर क्रिएट करने में, जहाँ पे टैलेंट का रिजर्वायर जो है वो क्रिएट हो जाता है. तो सक्सेशन प्लानिंग जो है वो इनेबल करता है टॉप मैनेजमेंट को कि वो कॉन्टिजेंसी प्लान्स प्रिपेयर करें. सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? एचआर वाले लोग बताएं जरा. यस, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेशन प्लानिंग? I'm not getting any answer. Yes, students, what do you mean by succession planning?
Succession planning simply means who will be succeeding the current leader. अगर जो current leader है वो छोड़ जाता है अपनी position तो who will come after it. So this is a decision that has to be taken care of ताकि कोई भी strategic leader अगर unfortunate circumstances में immediately उनको leave करना पड़ता है तो कंपनी के पास रेडी जो एक और लीडर है वो होना चाहिए जो उनकी पोजीशन को इमीडिएटली टेक अप कर सके. दिस इज कॉल्ड सक्सेशन प्लान. सो डिसाइडिंग इन एडवांस हु विल टेक अप नेक्स्ट. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so now the topic of leadership is finished. Next we'll discuss the corporate culture. Corporate culture क्या होता है? Yes, what do you mean by corporate culture? Organization climate and culture is called the corporate culture. Big organizations. Organization Like climate and culture. what culture? Like what are the rules and regulations there? What policies they are following? What type Okay. of business strategies they are making? Okay. Overall segment, overall structure of the what type of overall segment and the structure of the organization is. It can be defined in the varied ways. No? So means basically कल्चर जो है वो जनरली ऐसी चीज होती है जिसमें जो वैल्यूज एंड बिलीव्स होते हैं. ऑल द पीपल हु आर पार्ट ऑफ अ कल्चर दे बेसिकली हैव शेयर्ड वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम. This is called culture. So is the organization culture is also the culture when all the employees of the organization they have shared value and belief system. So the culture basically differentiates good organizations from the bad ones. So जो बहुत जो वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका जो कल्चर है वो बहुत ही यूनिक होता है. ठीक है, in a way that their ability to successfully implement strategies. ठीक है, तो composition of corporate culture जो है वो ये होती है shared things. ठीक है, for example यूनिफॉर्म जो है, ठीक है, जो all the employee of the organization they are gonna share similar kind of uniform they wear. Shared sayings. ठीक है, कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है एक वर्क मंत्रा हो सकता है कि लेट्स डू प्लानिंग, लेट्स गो गेट डाउन टू वर्क. ठीक है, शेयर्ड एक्शंस. ठीक है, कोई भी जो उनकी जिस तरह से वो एक्ट अपॉन करते हैं. ठीक है, शेयर्ड फीलिंग्स. शेयर्ड फीलिंग्स का मतलब है कि उनकी फीलिंग क्या है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के वो मानते हैं कि मतलब दिस फीलिंग वुड बी they never reward anyone. ठीक है, for the work they done. This could be a shared feeling among all the people who are working in the organization कि यहाँ पे किसी भी काम को रिवॉर्ड नहीं किया जा सकता किया जाता. दूसरा हो सकता है कि मीन हार्ड वर्क इज रिवॉर्डेड है. सो दिस इज अ गुड फीलिंग. ठीक है, सो ये है गुड कल्चर और बैड कल्चर. ठीक है, work is not rewarded here. This is a bad feeling that shows the bad culture. ठीक है, hard work is rewarded here. This is a feeling that shows that this is a good culture wherein hard work is being rewarded. Is it clear? Yes, ma'am. ठीक है, so जो beliefs और values हैं, ठीक है, वो जो है वो किसी भी कल्चर का जो है वो कंपोनेंट होती हैं. ठीक है, सो कल्चर कैन बी अ स्ट्रेंथ और इट कैन बी अ वीकनेस. सो किसी भी कल्चर जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्ट्रेंथ हो सकता है जहाँ उसकी वीकनेस हो सकता है. तो वीक कल्चर कब होगा? व्हेन देयर आर मेनी सब कल्चर्स एग्जिस्टेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एक कॉमन कल्चर नहीं है बट उसमें भी आगे जो है वो सब कल्चर्स हैं. few values and behavioral norms are there. Rare traditions, lack of sense of commitment, loyalty and identity, और highly politicized environment. power का जो power और politics का बहुत ज़्यादा जो है वो role है. hostility to change. people are like hostile to change. They are not willing to change. These are the characteristics of weak culture. On the other hand, characteristic of strong culture are that explicit
set of values and principles, considerable time devoted by the management for communication, and values are shared widely across the organization. So these are the features of a weak culture or a strong culture. Okay, so depending upon these characteristics, the culture of the organization could turn out to be a strength for it or the weakness for it. ठीक है, जो फैक्टर्स है जो स्ट्रॉन्ग कल्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं वो होते हैं कि अ फाउंडर और एन इन्फ्लुएंशियल लीडर हु एस्टैब्लिश्ड डिजायर्ड वैल्यूज. Because the culture of an organization, the process starts with the founder itself. कि जब the company has been founded, the founder है उसने क्या values जो है वो develop किए हैं, because those values will be driven throughout the organization from the start till the end. Sincere and dedicated commitment to open business of the organization according to these desired values. So मतलब उनका जो कमिटमेंट है कि वो इन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को जो है वो ऑपरेट करेंगे, and genuine concern for the well-being of the organization stakeholders. So there is a genuine concern within the organization to take care of each and every stakeholder who is working with the organization. So these are the factors that will lead to building a strong culture within the organization. Next is the relationship strategy culture relationship. ठीक है, स्ट्रैटेजी कल्चर रिलेशनशिप का मीनिंग है कि जो है जो स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो द ऑप्शंस द वेरियस स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स दे कुड बी लिमिटेड बेस्ड ऑन द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कॉर्पोरेट कल्चर में मैनेजमेंट स्टडीज में. इट हैज बीन ड्यू टू द फैक्ट that the successive research studies have pointed out that certain organization cultures tends to contribute to better financial performance of organizations. Okay, so this relationship work on the basis of the capability of corporate culture to generate competitive advantage. So we can say that strategy and culture are interrelated due to the fact that corporate culture itself can lead to the competitive advantage for the organization. And if the company is having competitive advantage, so it can have a choice of the various strategic alternatives based on that. So the various approaches to create a strategic supportive culture are the one listed over here. These are the 4 approaches. So ये numbering जो है वो गलत है, kindly ignore it. So the first one is to ignore corporate culture. First approach जो follow की जा सकती है, ठीक है, so with वो है when it is nearly impossible to change the culture. ठीक है, तो it is advisable because it is very difficult to change the wrong culture. So हम जब पहली चीज है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करने के लिए जो कल्चर है उसको कंप्लीटली इग्नोर करें और जो भी स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो वर्क करें. ऐसा तभी किया जा सकता है जब एग्जिस्टिंग कल्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन का दैट इज वेरी हार्ड टू चेंज. जब हमें लगता है कि उसमें कुछ भी चेंजेस हम नहीं कर सकते तो हमें उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देना. सेकेंड इज टू अडैप्ट स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन टू सूट कॉर्पोरेट कल्चर. So it is quite easier to change implementation to suit the requirements of the corporate culture. Because this is possible because the behavioral aspects of implementation offers a range of flexible alternatives to strategies in terms of structures, systems and processes. ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है जब हम स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि हम अपने हिसाब से स्ट्रक्चर्स को चेंजेस कर सकते हैं, सिस्टम्स को चेंज कर सकते हैं. इसी तरह से हम स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन को कॉर्पोरेट कल्चर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो अडेप्ट कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड है. थर्ड है टू चेंज कॉर्पोरेट कल्चर टू सूट स्ट्रेटेजी रिक्वायरमेंट. ठीक है, इसका मीनिंग है कि हम कॉर्पोरेट कल्चर को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं ताकि हमारी नई स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो सुटेबल हो. फॉर एग्जाम्पल
जो पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में जो टेक ओवर्स और एक्विजिशन थे इंडियन इंडस्ट्री में, दे लेड टू सिचुएशन वेयर मेनी erstwhile मल्टीनेशनल सब्सिडरीज वर टेकन ओवर बाय द फैमिली बिजनेस ग्रुप्स. ठीक है, दिस लेड टू अ प्रोसेस ऑफन prolonged एंड पेनफुल ऑफ कल्चरल ट्रांजिशन. तो जब एक्विजिशंस और टेक ओवर्स हुए पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में, तो बहुत सारी कंपनी ने जो है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को टेक ओवर किया. ठीक है, और इसके कारण बिकॉज देयर culture was entirely different. The company that was taken over by them, their culture was entirely different. So उसके कारण उनको जो है उनका जो कल्चर है उसको बिल्कुल ही चेंज करना पड़ा उनके कल्चर को मैच करने के लिए. They need to change the strategy to fit the corporate culture. लास्ट चीज है कि हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें इस हिसाब से कि वो हमारे कॉर्पोरेट कल्चर के अकॉर्डिंगली जो है वो फिट हो. ठीक है, सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ अप्रोचेस टू क्रिएट द फिट बिटवीन द स्ट्रेटजी एंड द कल्चर. ठीक है, सो विद दिस द टॉपिक इज फिनिश्ड. ठीक है, this might be visible to all of you, the game pin. So all of you are already know that you need to log into www.kahoot.it and therein you need to enter this pin. Students join fast. Okay, still some of you have not joined, so I'll wait for a few more seconds and then I'll start the game.
अच्छा, जिन्होंने पहले नहीं प्ले किया वो देख लें कि क्वेश्चन यहाँ पे विजिबल होगा और यहाँ पे ऑप्शंस के नीचे कलर है, और जब आपने आंसर देना था आपको सिर्फ कलर के अकॉर्डिंगली आंसर देना है। So the right answer was this, leadership by an organization. Okay, हरी, मैम मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं शो हुआ। अच्छा सलीन क्यों? Yes, मैम। बच्चे मैम, क्वेश्चन, मुझे भी नहीं शो हुआ मैम। बच्चे क्वेश्चन जूम ऐप पे ही आपको विजिबल होगा। क्वेश्चन जो है वो जूम ऐप पे देखना है, आंसर आपने काहूत पे देना है, ठीक है? ओके मैम। हाँ, अभी ध्यान से करना फिर। Okay, next question is there on your screen. So 13 लोगों ने आंसर दिया था, ठीक है? राइट आंसर इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। सो 3 लोगों ने सिर्फ राइट आंसर दिया है, ठीक है? तो लेट्स सी। ओके मनदीप, you are at top followed by Celine. So this is, every organization has dash organizational culture. ओके, दिस टाइम सभी 15 के 15 लोगों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। आंसर वाज यूनिक। So every organization has unique organizational culture, and
Mandeep is maintaining his position, followed by Celine. There is interchange of position between Vikram and Harish. So, next question is there. Okay, the right answer is esteem and self-actualization. And आप में से सिर्फ 6 लोगों ने ठीक आंसर किया है. So let's see who is on the leaderboard. ठीक है? So Aman and Preeti, they have come up. So Mandeep is still maintaining the position, followed by Celine and Vikram. Okay, next is. So herein also there is a fill in the blank. An organization's dash embraces the rituals and shared meanings held by all that distinguishes the organization from others. It's an easy question. Okay, this time no one has been able to given the right answer. Right option is this esteem and self-actualization. ठीक है, और some of you have even missed to give the answer. So there is no changes in the leaderboard this time. Okay, the right answer is the first option, exploitation of core competencies, and 8 of you have been able to crack the right answer this time. So, oh, Celine, you are leading now. Mandeep is at the second position, Aman at third, followed by Vikram and Mudassir. Okay, Mudassir has been added to the top 5. And now there is last question. Let's see who becomes the winner.
So the right answer is this third option: consultation with all employees before the decision making. And 6 out of you have been able to give the right answer. So let's see who are the winners. At third position, we have Mandeep. Well done, Mandeep. And second is Vikram. Good, Vikram. And the winner is Savleen. Great. Savleen, good. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Raymond and Sonia this Thank time. you, ma'am. So the next topic for the day is this functional and operational implementation. So we'll be starting with the functional implementation first. So the functional strategies basically deals with a relatively restricted plan designed to achieve objectives in a specific functional area, allocation of resources among different operations within that functional area, and coordination among different functional areas for optimal contribution to the achievement of the business and corporate level objectives. So फंक्शनल स्ट्रेटजी जो है वो बेसिकली डील करती है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनल एरिया के साथ, और इसका जो है वो बेसिक पर्पस जो होता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज का, दैट इज टू एलोकेट रिसोर्सेज टू different operations within one particular functional area. So within each functional area there is a need to perform varied operations, and there is also a need to allocate resources accordingly for performing those operations, and this is the task of the functional strategy. Another key task of strategy implementation is to align or fit the activities and capabilities of an organization with its strategies. So जैसे मैंने बताया कि a key task is to create a fit between the strategy and the तो दो तरह का फिट होता है बेसिकली, वर्टिकल फिट एज वेल एज दी हॉरिजॉन्टल फिट. सो वर्टिकल फिट क्या होता है? स्ट्रेटजीज ऑपरेट एट डिफरेंट लेवल्स एंड देयर हैज टू बी कॉन्ग्रुएंस एंड कोऑर्डिनेशन अमंग दी स्ट्रेटजीज. सच अ कॉन्ग्रुएंस इज दी वर्टिकल फिट. ठीक है, वर्टिकल फिट होता है कि जो डिफरेंट लेवल्स हैं, लाइक वी हैव 3 लेवल्स of strategy formulation, that is corporate level, business level and functional level. So the coordination between these 3 levels is called vertical fit. Is it clear, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर हम वर्टिकल फिट की तरह से देखें तो we can have the various type of functional strategies such as strategic marketing management, strategic financial management, strategic operation management and strategic HR, strategic information management. Okay, and ठीक है, ये है जो मैंने अभी बताया आपको. So according to the vertical fit, there are 5 types of functional strategies which are listed over here: strategic marketing management, strategic financial management, strategic operations management, human resource management, and the last one is strategic information management. Then next is the horizontal fit. So there has to be congruence and coordination among the different activities taking place at the same level, and this is called horizontal fit. ठीक है, तो horizontal fit जो है वो basically it takes place in the course of operational implementation. ठीक है,
So the consideration of horizontal fit means that there has to be an integration of the operational activities undertaken to provide a product or service to a customer. These have to take place in the course of operational implementation, and operational implementation is the approach adopted by an organization to achieve operational effectiveness. Okay, so there are number of functions you are already well aware of. There are number of functions that are being performed by an organization. It could be marketing function, it could be operations function, it could be human resource function, it could be marketing function, or it could be information management function. So within each functional area, number of operations has to be performed. For, let's say, in marketing, we take care of the various operations related to the product, price, place, and promotion. So these are the activities that are taking place at the same level. So there should be a fit between all these activities. So this fit is called horizontal fit. All the activities that are being that are taking place at the same level, the fit between all these activities is called horizontal fit. So this is what is operational implementation that we'll be discussing later on in this chapter. So starting with the functional plans and policies. So in the functional plans and policies, we'll be discussing about the nature of functional plans and policies, what is the need for functional plans and policies, and how can we go about development of functional plans and policies. So starting with the nature of functional plans and policies. So functional strategies basically operate on a level below the business strategies. So with once in the very first chapter we did, there are three levels of strategy formulation. At the top we have corporate level, then at the second level we have business level strategies, and followed by the functional strategies. So similarly it is written here that it comes immediately below the business strategies. So there might be several sub-functional areas within functional strategies. So एक ही functional strategy के अंदर various sub-functional areas हो सकते हैं. Functional strategies defined in terms of functional plans and policies are plans or tactics to implement business strategies and are made within the guidelines which have been set at the higher level. तो functional strategies का basically meaning जो है वो functional plan and policies में है कि ये ऐसे plans या tactics हैं जो हम business strategies को implement करने के लिए adopt करते हैं. Plans are formulated to select a course of action, while policies are required to act as guidelines to those actions. प्लान हम करते हैं कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन, क्या तरीके से हमने काम करना है, और पॉलिसीज जो है वो बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमने ये प्लान जो है वो अंडरटेक करने होते हैं. Functional plans and policies are therefore in the nature of the tactics which make a strategy work. So बेसिकली फंक्शनल प्लान्स एंड पॉलिसीज की जो नेचर है वो एक टेक्टिक की फॉर्म है जिससे हम किसी भी स्ट्रेटजी को वर्क जो है स्ट्रेटजी जो है वो वर्क करती है. Functional managers need guidance from the corporate and business strategies in order to make decisions. So means as for formulation and implementation of business strategies, the business level managers, they need to take guidance from the upper level, that is the corporate level. Similarly, the functional managers, they are required to take guidance from the both the upper levels, the corporate level as well as the business level. So in simple terms, functional plans tell the functional managers what has to be done, while functional plan policies state how the plans are to be implemented. So according to the GLUIC, functional plans and policies are developed to ensure that the strategic decisions are implemented by all the parts of an organization. ठीक है. सो पहली चीज तो ये इंश्योर करने के लिए कि जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है वो ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पे जो है वो इम्प्लीमेंट हो, हर एक पार्ट पे जो है वो इम्प्लीमेंट हो. There is a basis available for controlling activities in the different functional areas of a business. ठीक है. Already the organization is being divided into the varied functional areas, and the control, the basis for control is available at every functional area. The time spent by functional managers on decision making may be reduced as the plans lay down clearly what has to be done.
and the policies provide the discretionary framework within which decision need to be taken. So जब हम इस लेवल पे फंक्शनल प्लान्स एंड पॉलिसीज हम फॉर्मुलेट करते हैं तो जो फंक्शनल मैनेजर का जो टाइम है दैट हैज टू बी स्पेंड ऑन डिसीजन मेकिंग इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड बिकॉज फंक्शनल प्लान इटसेल्फ ले डाउन क्लियरली कि क्या काम जो है वो करना है और किस तरह से करना है. ठीक है, द डिस्क्रिशनरी फ्रेमवर्क इज आल्सो सेट अप बाय द फंक्शनल पॉलिसीज. Similar situations occurring in different functional areas are handled by the functional managers in a consistent manner. ठीक है, तो time to time whatever situation arises, the functional managers keep on managing within their functional capacity, and coordination across the different functionals takes place where नेसेसरी. ठीक है, तो जब भी इनको आपस में कोऑर्डिनेट करने की जरूरत होती है बिकॉज देयर आर मेनी एरियाज वेयर इन दे नीड टू कोऑर्डिनेट लाइक द मार्केटिंग मैनेजर्स बिकॉज दे आर मेकिंग promises to the outside customer, they need to coordinate with the production department because before promising that this product will be available to them, they need to confirm it from the production department whether they'll be able to produce within that particular time or not. सो वहां पे उनको आपस में कोऑर्डिनेट करने की जो है वो जरूरत पड़ती है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन. So next is the development of functional plans and policies. The development on functional plans and policies is aimed at making the strategies formulated at the top management level practically feasible at the function level. So the basic purpose of formulation of functional plans and policies is to make sure that whatever strategy is being formulated at the top level, so that is practically achievable because it has to be achieved, it has to be implemented at the functional or the operational level. So just to make sure that it is actually achievable, there is a need to formulate these functional plans and policies. The process of development of functional plans and policies may range from the formal to the informal. So it could be a formal procedure or it could be a informal procedure as well. The process of developing functional plans and policies, whether it is formal or informal, it is similar to that of strategy formulation. तो जैसे हम strategy formulation करते हैं, similar form में हमने जो है वो functional plans and policies जो है वो develop करनी होती है. Functional areas have been traditionally segregated into finance, marketing, production, and personnel. Information management has emerged as a significant function within organizations, but not all organizations divide functional areas traditionally. They do it on the basis of what they actually need. So, मतलब जो पुराना तरीका था functional areas को segregate करने का वो था finance, marketing, production, and personnel, which is also called human resources. So these days it is not termed as personnel, but the a newer term that is being used for it is called human resource management. So similarly, a newer functional area has been emerged over a time, which is called information management. But it is not that every organization will be dividing their organization into these functional areas only. So they may choose any type of segregation as per their need. So means कि कई department में human resource management नहीं होता. Let's say that the organization is not a manufacturing organization, so that means they do not need a production department for them because there is no need, there is no production happening, so they don't need any production department. So every organization will divide its functional areas according to their need. Is it clear, students? Yes, ma'am. Okay, so functional plans and policies will be of 5 types: financial plans and policies, marketing plans and policies, operations plans and policies, personnel plans and policies, and information management plans and policies. We'll be discussing it one by one, starting with the financial plans and policies.
Students, you have already done this while we did this operation capability areas. Therein also you touched these points. So इसको ज्यादा जो है वो मैं elaborate नहीं करूंगी, ठीक है, because आपने पढ़ा हुआ है, उसकी repetition ही है जल्दी. So first is the sources of funds. So the policies and plans related to the source of funds deal with financing or capital mix decisions. ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं कि हमारे जो कैपिटल मिक्स है वो किस तरह का होगा. तो द फैक्टर्स related to this particular plan and policies include capital structure, procurement of capital and the working capital borrowing, reserves and surplus as the source of funds, and relationship with lenders, banking and financial institutions. Okay, so these are important. Means the plans and policies related to the sources of funds are quite important because they determine how financial resources will be made available for the implementation of strategies. So the second is usage of funds. Once we have identified the various sources from wherein we'll be generating funds for strategy implementation, then we'll need to decide on how will we be utilizing these funds. So the plans and policies related to the uses of funds deals with investment or asset mix decisions. So the various important factors regarding which plans and policies related to uses of funds are to be made include capital investment, fixed asset acquisition, current assets, loans and advances, dividend decisions, and relationship with shareholders. So this means the policies and plans related to uses of funds is quite important aspect because it relates to the efficiency and effectiveness of resource utilization in the process of strategy implementation. Next is the management of funds. So management of funds basically deals with the decisions related to the systematic aspects of financial management and the various major factors that are related to policies related to management of funds are system of finance, ठीक है, accounting and budgeting, management control system, cash, credit and risk management, cost control and reduction, tax planning and advantages. ठीक है, so the management of funds play a very important role in strategy implementation because it aims at the conservation and optimum utilization of funds. So the funds that have been generated when we made policies related to the sources of funds will be actually utilized when we'll be managing the funds. So to ensure the effective utilization of resources, we need to make plans and policies related to the management of funds. Next area is the marketing plans and policies. So the plans and policies related to the marketing have to be formulated on the basis of the 4 Ps. And these 4 Ps are related to the product, price, place, and promotion. What is product, students? Yes. Ma'am, a good, a So- service or a good is known as a product. So good is basically a synonym for product. So Yes, ma'am. ठीक है, anything Services or anything we used to services. say. No. So it is an offering that is made to the customers, and any offering that Tangible has, goods. any offering that is Okay. being made to the customer that satisfies their need is called product. Okay. ma'am. जो भी हम ऑफर करते हैं उसका कोई यूटिलाइजेशन होता है कस्टमर की आईज में, तभी वो बाय करते हैं. एंड इफ इट इज इन टेंजिबल फॉर्म, इफ इट इज अ फिजिकल ऑफरिंग, then it is called product, and if it is intangible offering, this is called service. So Okay. ma'am. ठीक है, so Yes, ma'am. product related decisions will be based on related to the quality of the product, the features that have to be embedded in a particular product, and the brand name, packaging, labeling, etc. So pricing जो है basically denotes the money that will be paid by the customer for getting a product. So उसमें जो है वो हमें basically decide करना पड़ता है कि what will be the MRP
the policies related to the discount, mode of payment that will be made available to the customers, or credit terms, payment terms जो है उनके related जो भी plans and policies and that will be covered under the pricing part. Next is the place. ठीक है, place is the process by which goods and services will be made available to the customers. So distribution plans and policies basically are related to means what channel to be used, the transportation medium, inventory, storage, etc. And last one is promotion. So promotion basically deals with the marketing communications wherein we establish communication with the customers. So it basically the promotion plans and policies relates to the promotion mix. Okay, and promotion mix consists of the various activities that can be used for communicating with the customers, and it includes advertising, sales promotion, public relations, publicity, etc. Next is the operations plans and policies. So operations plans and policies जो है वो relate करती हैं प्रोडक्शन सिस्टम के साथ. ठीक है, सो ऑपरेशन प्लानिंग, कंट्रोल या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ. ठीक है, तो इनमें जो है वो बेसिकली हम 3 तरह की जो प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं. फर्स्ट होती है प्रोडक्शन सिस्टम, सेकंड है ऑपरेशंस प्लानिंग एंड कंट्रोल, एंड थर्ड है R&D. So the production system is concerned with the capacity of the plant, location of the plant, layout, product or service design, degree of automation in the factory, etc. So this is important. The plans and policies related to the production system is important because it deals with the operational capacity of the organization to handle its objectives. Then next is the plans and policies related to operations planning and control. So operations planning and control policies are related to the supply of materials, inventory, cost and quality management, and maintenance of plant and equipment. So यहाँ पे जो है वो strategy implementation का जो है वो view role जो है वो होता है ये देखना कि कितनी इफेक्टिवली जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं और डे टू डे ऑपरेशंस में हम उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं. लास्ट will be the plans and policies related to research and development, and this relates to the new product development, HR and facilities, level of technology transfer, etc. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है personnel plans and policies, which is also called human resource management these days. So these are the policies related to the personnel system, organizational and employee characteristic, and industrial relations. Under means the personnel system, the various factors that will be dealt with includes manpower planning, selection, development, compensation, communication, and appraisal, etc. And in organizational and employee characteristics, the factors that are taken care of includes the corporate image, quality of managers, staff and workers, perception about the image and the organization as an employer, availability of development opportunities for employees, working conditions, etc. And the third thing is industrial relations. This deals with the issues related to the union management relationships, collective bargaining, safety, welfare, and security. The last functional area is called information plans and policies. So herein the factors that will be taken care of are related to the acquisition and retention of information, factors related to processing and synthesis, retrieval and uses of information, and transmission and dissemination. जो पहला फैक्टर है वहां पे जो plans and policies बनाई जाएंगी that will deal with the factors such as sources of information, quantity of information required, the quality of information required, timeliness of information, retention capacity, etc. And the second point, the plans and policies related to the processing and synthesis of information basically deals with the factors such as database management, computer system required to store the information, software capability, etc.
And the third point is the plans and policies related to the retrieval and uses of information. It deals with the factors such as availability and the appropriateness of information. ठीक है कि जब भी जरूरत पड़े जिस भी तरह जिस भी appropriate फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है क्या वो अवेलेबल है कि नहीं है. Last is the factors related to the transmission and dissemination of information. It deals with factors such as speed, scope, width, and depth, coverage of information, and the willingness to accept the information. Next is the integration of functional plans and policies. As these functional areas are different, so all the policies that are being formulated at the functional level needs to be integrated. ठीक है, so इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है मतलब जो इंटीग्रेशन है फंक्शनल प्लान्स एंड पॉलिसीज का, दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. तो क्या क्या कंसिडर करते हैं हम फंक्शनल प्लान्स एंड पॉलिसीज में? 5 कंसिडरेशंस हैं. पहली है नीड फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी. ठीक है. सेकंड, रेलेवेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कैपेबिलिटी. थर्ड है मेकिंग ट्रेड ऑफ डिसीजंस. Fourth is determination of intensity of linkages, and fifth one is timing of implementation of policies. तो जो first है need for internal consistency, this arises due to the segregation of key organized tasks. Internal consistency in various functional plans and policies basically ensures that the different functional areas do not work at cross purposes but operate in the सेम लेवल. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है रैपिड एक्सपेंशन की थ्रू डिफरेंशिएशन, तो उनकी जो मार्केटिंग पॉलिसी है बहुत ही अग्रेसिव हो सकती है. सो R&D जो है वो फोकस करेगा ऑपरेशंस के ऊपर, और उनकी जो फाइनेंशियल अप्रोच है अगर वो कंजर्वेटिव है, और HR पॉलिसी जो है वो प्रोग्रेसिव हो सकती है. तो इन सभी जो है फंक्शनल एरियाज में से जो फाइनेंशियल एरिया है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज कंपनी इज गोइंग फॉर डिफरेंशिएशन एज अप्रोच फॉर एक्सपेंशन, बट जो उनकी फाइनेंशियल अप्रोच है वो बहुत ही कंजर्वेटिव है, सो इट मे नॉट बी रेलेवेंट फॉर दिस. सो is it clear, students? The very first consideration, need for internal consistency. Yes, is it clear? Yes, ma'am. Second factor is relevance to development of organizational capability. ठीक है. So organizational capability के development basically in terms of strategic advantage or competitive advantage, this is quite relevant to integration of functional plans and policies. So जो synergistic effects हैं वो यहीं पे जो है वो occur होते हैं जब हम functional plans and policies जो अगर वो आपस में relate करते हैं तो company can take benefit of synergy, otherwise it can create dis-synergy for the firms. अगर वो उनमें आपस में जो है इंटीग्रेशन नहीं है तो डायसिनर्जी जो है वो अक्कर होगी. थर्ड है मेकिंग ट्रेड ऑफ डिसीजन. So the plans and the formulation of functional plans and policies involve trade-off decision. So this is because of the inherent nature of the functional areas. ठीक है. So trade-off का meaning है कि किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को जो है वो अडेप्ट करना पड़ेगा, जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा दूसरे फंक्शन के लिए जो ज्यादा रेलेवेंट है. Then a determination of intensity of linkages. The intensity of linkage that exists between the different functional areas is important consideration in determining the level of coordination that should exist between the different functional areas. ठीक है. सो अगर एक कोई स्ट्रेटजी जो है वो हाई टेक्नोलॉजी के या सुपीरियर प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है तो उसको जो है वो क्लोज कांटेक्ट चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ या प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टीम के साथ. ठीक है. तो अकॉर्डिंगली हर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली जो है वो डिपेंड करेगा कि कौन से पर्टिकुलर फंक्शनल एरियाज में कितना ज्यादा इंटेंस रिलेशनशिप या कितना ज्यादा इंटेंस लिंक जो है वो क्रिएट करने की जरूरत है.
लास्ट है टाइमिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, सो ओवरऑल स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन की सक्सेस के लिए जो फंक्शनल प्लान्स एंड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने का टाइमिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि कब कोई पर्टिकुलर जो है स्ट्रेटजी कोई भी प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर वो लेट किया जाता है तो स्ट्रेटजी जो है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। नेक्स्ट इज दी मैकेनिज्म्स टू integrate functional plans and policies. First one is the information system. ठीक है, so horizontal information linkages एक्सक्यूज aimed मी at- मैम, हाँ जी, मैम स्क्रीन पे ब्लैक ब्लैक कट के आ रहा है। स्क्रीन पे यस मैम। is it happening with everyone? Yes, students, is the screen clearly visible to everyone or not? Because at my end it's clearly visible. मैम यहाँ पे जैसे फोटो नहीं कट कट के आता है, चार चार दो अलग है। राजकुमार, हो सकता है बच्चे आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, बिकॉज ऐसा कोई और स्टूडेंट नहीं बोल रहा। ठीक है, मैं स्क्रीन खींच के भेजते मैम। हाँ, बट मेरे एंड पे देर इज नो प्रॉब्लम, नेट इज वर्किंग प्रॉपरली एंड जो स्क्रीन है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो आप बाद में देख लेना, आई सेंड यू द पीपीटी, वहां से आप देख लेना। ठीक है, सो फंक्शनल एरियाज बिकॉज दे आर वर्किंग एट द सेम लेवल, तो उनमें एक हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन लिंक जो है वो क्रिएट होना चाहिए, ताकि जो क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन है वो क्रिएट किया जा सके। सेकंड इज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, so the personal interaction between the various people who are involved in a project or who are discharging related function, it is achieved through the direct contact. Then task forces बनाई जा सकती हैं। ठीक है, और देन फुल टाइम इंटीग्रेटर हायर किया जा सकता है, जो जिसका काम सिर्फ डिफरेंट फंक्शंस में जो है वो इंटीग्रेशन एस्टेब्लिश करना हो सकता है। देन टीम्स कुड बी फॉर्मुलेटेड। ठीक है, तो एक टीम जो है वो बेसिकली स्ट्रॉन्गेस्ट हॉरिजॉन्टल लिंक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो जैसे एक परमानेंट टास्क फोर्स है, वैसे ही टीम आपको पता है कि टाइम टू टाइम किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती है, और वैसे ही वो प्रोजेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, टीम जो है वो अबंडन कर दी जाती है। सो बेसिकली टीम्स आर एड हॉक अप्रोचेस, बट द टास्क फोर्स जो है वो फुल टाइम होता है, परमानेंट होता है। लास्ट टॉपिक इज ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन। सो ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन इज बेसिकली एन अप्रोच। हमने जब स्टार्टिंग में फिट का जो है वो पढ़ा था कॉन्सेप्ट, तो वर्टिकल फिट जो है वो फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर्ड होती है, और जो हॉरिजॉन्टल फिट है दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन इज द अप्रोच अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। So the various areas of operational effectiveness are productivity, processes, people, and pace. So we'll be discussing these areas of operational effectiveness one by one. So before that, मैम just एक्सक्यूज मी, yes, मैम लेक्चर कब तक है? 11:15 तक था वैसे। मैम हमारी नेक्स्ट क्लास भी है ना 11:30 पे। Okay, यस किसका है नेक्स्ट लेक्चर? मैम, संप्रीत मैम का वर्कशॉप ऑन इंडियन एथोस। कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं, मैम को मैं बोल देती हूँ थोड़ा लेट ले लेंगे। ठीक है, बिकॉज 5 to 10 minutes में आई विल बी फिनिशिंग इट ऑफ। सो जो की रोल है ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन का इन परफॉर्मिंग ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, that you can see while implementing strategies. First of all, strategic plan is developed, then we need to activate strategies, जहाँ पे हमने project procedures और resource allocation करते हैं। Then we need to take care of change management, which basically deals with the behavioral implementation, that is the leadership, role of leadership and the role of corporate culture. Then we aim at achieving effectiveness. Now, effectiveness can be achieved through functional implementation and operational implementation. Okay, which together means the
fit between these particular two things leads to the operational implementation. Operational effectiveness can be achieved through four things, that is the people, processes, productivity and the pace. ठीक है, and the last one is the strategic control and evaluation. So now the very first thing that is required for achieving operational effectiveness, the first area is called productivity. Productivity क्या होती है? हाँ जी, what is productivity? So productivity is the amount of output in relation to the input. हमने क्या जो है वो input किया और हमें कितना output मिला, ठीक है. तो जो प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए वेरिएड जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं वो ये हैं. जस्ट इन टाइम आपने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है. और साइकिल टाइम रिडक्शन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें है कि किसी भी काम को करने का जो टाइम है उसको रिड्यूस करना. ग्रुप टेक्नोलॉजी है कि जिसमें हम डाटा और कंपोनेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि प्रोडक्ट जो है वो सेम प्रॉपर्टीज और मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स वाले हों. मास कस्टमाइजेशन का मीनिंग है कि हम मास प्रोडक्शन और कस्टमाइजेशन को ब्लेंड कर सकें. Concurrent engineering and processing, simultaneous design of product and services, and the related process includes manufacturing and support. So then optimized production technology, flexible manufacturing system, cellular manufacturing, lean manufacturing, total productive maintenance, all these are practices that are being followed by organizations these days to enhance their productivity. सेकेंड थिंग इज प्रोसेसेस. ठीक है, प्रोसेसेस जो है वो जो है मैनेजमेंट को जो है वो हम जब डिफाइन करते हैं तो हम उसको प्रोसेसेस की टर्म में डिफाइन करते हैं. लाइक के मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में भी प्रोसेसेस होते हैं. तो वेरियस प्रोसेसेस दैट आर बीइंग टेकन केयर ऑफ. ठीक है, जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं प्रोसेसेस के रिलेटेड वो बहुत सारी हैं. ठीक है, तो उसमें से जो मेजर प्रोसेसेस हैं वो ये हैं सारे. ठीक है, टीक्यूएम, वीसी, बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, ईआरपी सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, बेंचमार्किंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑफ सोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो पार्ट है हमारी जो मॉडर्न प्रोसेसेस है उनका. ठीक है, पीपल फैक्टर इज अ कंट्रीब्यूटर टू इफेक्टिवनेस एंड इट इज इंडिकेटेड बाय मेनी टर्म्स, दैट इज जॉब इनरिचमेंट, एम्पावरमेंट, टीम बिल्डिंग, मल्टीटास्क, मल्टी स्किलिंग एक्सेट्रा. तो पीपल फैक्टर में जो हम चीजें जो फोकस करते हैं वो है स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, performance management, training and development, performance appraisal and retention management, and separation management. And last thing in achieving effectiveness is the pace. ठीक है, so PS का मीनिंग होता है स्पीड ऑफ ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन, कि किस पेस पे हम जो है वो ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अचीव कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हेल्प करती हैं पेस को इंक्रीज करने में. टाइम स्टडी, नेटवर्क एनालिसिस, एक्टिविटी चार्ट्स, टाइम बेस्ड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, आईटी और नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन या वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी फैक्टर्स जो हैं दे कंट्रीब्यूट टू द पेस ऑफ ऑपरेशनल इम्प्लीमेंटेशन. सो दिस इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये पीपीटीज जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगी. ठीक है, एज रिक्वेस्टेड बाय यू. एंड अनदर अनाउंसमेंट आई हैव मेड रिगार्डिंग दी सबमिशन ऑफ थर्ड असाइनमेंट दैट इज केस स्टडी, वो आप कर देना. ठीक है, बाय.